friends, welcome to ProTalent and I am Nitin Parmar. I welcome you all for this issue-based learning. Today we are discussing about some important learning from one of the very crucial case going on in our country. दोस्तों, SUSHANT Singh Rajput, a young budding actor, committed suicide and that shook the entire country. ठीक है दोस्तों, I understand that the kind of situation he may be in. Okay, he may be, you can say, mentally disturbed, but what I condemn is the very act of committing suicide. So young students, you have to be very careful that this is not the solution in future. Okay, at any point in time, at any situation, the only solution is, you can say, continue, endure. ठीक है, that is where the situation would be. दोस्तों, इस चीज को हाइप करके, बड़ा करके जस्टिफाई करने की आवश्यकता नहीं है. दैट सुसाइड इज जस्टिफाइड, नो. ठीक है दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे जहां पे सुशांत सिंह राजपूत के पेरेंट्स ने और फैमिली ने रिया चक्रवर्ती, जो उनकी गर्लफ्रेंड थी ऐसा माना जाता था, उनके ऊपर कुछ आरोप लगाए हैं. सो वी आर ट्राइंग टू लर्न, you can say, the criminal law from this particular perspective. Okay, so we are not, you can say, saying that the arop on Rhea Chakraborty are, you can say, valid or not. Okay, we are not in any, you can say, one's favor. In fact, we are not really aware about the circumstances and we have not never, you can say, studied it in detail, but we have studied the FIR and we are just trying to learn some important, you can say, sections which are there in FIR. So let's understand those. Okay, so उनके ऊपर क्या charges लगाए गए हैं रिया चक्रवर्ती के ऊपर? सेक्शन 341, सेक्शन 342, सेक्शन 406, 420, 323, 506, 380 and 306. So we are trying to learn this, you can say, Indian Penal Code from the perspective of the law aspirants. Obviously this session will not have in detail understanding about this, but for sure you are going to understand what is this section 341. ठीक है, what are the essential ingredient of this particular crime. ठीक है, वो हम बात करने की कोशिश करेंगे. Okay, चलिए, great, let's see one by one. This is an FIR copy. Yes, ठीक है, मतलब सोशल मीडिया पे घूम रही है. So I'm sure every one of you must be aware about it. So the complaint against Rhea Chakraborty is Rhea had kept Sushant away from his family. ठीक है, that is section 341 and section 342. Here we have to understand that there is a wrongful restraint and wrongful confinement. Both of them are very different. ठीक है, so when you force someone, ठीक है, from moving absolutely, then it is called wrongful confinement. ठीक है, if you control someone partially and you are not, you can say, allowing that person to move in a particular desired direction, then it is called wrongful restraint. So for example, Mr. A was, you can say, moving to, you can say, a particular place. There are two routes to that and you stopped one of the route. ठीक है, illegally, ठीक है, with a wrong intention, then it is called wrongful restraint. But you block both the routes. ठीक है, there are no other ways to go out, then it is called wrongful confinement. Okay, so दोस्तों, wrongful restraint और wrongful confinement का अंतर क्या होता है? So any person is prevented from going in a particular direction which is normally entitled to move, okay, which is a partial restraint, then it is called wrongful confinement. Okay, but a restraint of liberty of a person without any lawful justification, and that is a total restraint, that is called wrongful confinement. Yes, ठीक है, here the knowledge is necessary that you are doing this. Here in this wrongful confinement, knowledge is not necessary. ठीक है, okay, so the idea here is movement is allowed. Okay, no limit prescribed, but it is partial. Here it is absolute. Okay, so there is only one particular way you can move which is desired by the person who is interested, you can say, to confine the person. So for example, let's say I want to stop someone from moving in all the direction and moving in a particular way only, so that is confined, that is called wrongful confinement. Okay, similarly, another complaint against Rhea was Rhea transferred crores from Sushant's bank account. So this brings section 406 and section 420. Section 406 is criminal breach of trust.
दोस्तों criminal breach of trust is a very important, you can say, section you might have seen many times in many competitive examination. ये section 406 के ऊपर questions बनते हैं, and obviously so section 420 वहीं से तो वर्ड एक फेमस हुआ, किसी ने किसी के साथ चीटिंग करी तो हम बोलते हैं 420 ही करी, यस नो. सो श्री 420 है ना, जो इंडिया में एक बहुत साल पहले एक मूवी आई थी राज कपूर की, ठीक है, तो वो इसी के ऊपर से बनी थी, दैट इज चीटिंग and dishonestly inducing delivery of property. So I'm sure all of you understand this कि किसी को cheat करना, किसी को dishonestly induce करना कि भाई तू यही property, ये पैसा मुझे दे दे, that is called cheating and dishonestly inducing. While criminal breach of trust is very important, whoever dishonestly misappropriates or converts to his own use a property which is entrusted to him by a rightful possessor. So what are the essential ingredients? So there has to be a rightful possessor. So in this case Sushant Singh must be having a rightful possessor because he was holding a bank account. Okay, now that you can say money is entrusted to Rhea possibly, है ना. सो जो भी कारण से होगा, शायद उनके पास कार्ड होगा, कार्ड के साथ उसका नंबर दे दिया होगा पिन का, ठीक है, या उनके पास बैंक में से पैसे निकालने के लिए चेक के ऊपर उनकी सिग्नेचर चल सकती होगी, ठीक है. सो दैट इज इंटरेस्टेड टू हर, ठीक है, एंड शी कन्वर्ट्स और मिसअप्रोप्रिएट्स डिसऑनेस्टली, देन दैट्स कॉल्ड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. दोस्तों ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में महत्वपूर्ण पार्ट है ट्रस्ट, ठीक है. सामने वाले बंदे के ऊपर आपने ट्रस्ट रखा, उसने आपकी बातें सुनी, एक्सेप्ट करी, ठीक है, और उस बंदे ने उसका मिसयूज किया, दैट इज कॉल्ड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. अनदर कंप्लेन अगेंस्ट रिया दैट सुशांत wanted to invest in organic farming, but Rhea stopped him, threatened that she would leak information about his mental health to media. ठीक है, I'm sure we got to understand that post this suicide we realized that he was not mentally stable. He was consuming certain drugs as well, which is medical drug, antidepressant वाले जो drugs होते थे, he was consuming, which is approved by the government. Okay, so here section 323 and section 506 you can say are involved. Section 323 says voluntarily causing hurt, and section 506 is criminal intimidation. So what is voluntarily causing hurt? दोस्तों voluntarily causing hurt का मतलब होता है, you can say someone, you can say who is voluntarily causing hurt. So I know that I am hurting someone, I know it will hurt that person, ठीक है. So that is really called voluntarily causing hurt. वैसे self explanatory है, ठीक है, मैं जानबूझ के उसको hurt कर रहा हूँ. when you can say in this scenario, ठीक है, it is really known to Rhea that if she threatens Sushant about mental health to media, it will hurt. So that is called voluntarily causing hurt. Yes. And is it criminal intimidation? Yes. ठीक है. So criminal intimidation requires threatening a person with an injury to his person. Injury is a very important word. ठीक है. Injury to the person or reputation or a property. Yes or no? So यहाँ injury का मतलब क्या है? Does that mean physical injury? ठीक है, पॉसिबल, यस. सो यहाँ पे इंजरी का मतलब है फिजिकल इंजरी. रेप्यूटेशन और प्रॉपर्टी की इंजरी तो इन्होंने अलग से कवर कर ही ली है. यस नो, द थ्रेट मस्ट बी विथ एन इंटेंशन टू कॉज अलार्म टू दैट पर्सन और कॉज दैट पर्सन टू डू समथिंग इज नॉट लीगली बाउंड टू डू फॉर अवॉइडिंग हार्म दैट मे अराइज if it does not do it. So in this case, Sushant wanted to do organic farming. He was not allowed to do it. So possibly criminal intimidation if it is proven. Okay. So we are not, you can say, becoming a sort of parallel, you can say, judiciary. No, that's obviously we are not. We are just helping you out, the young students for competitive examination. That's it. So let's, you can say, restrict that part. Okay. Cause that person to do, omit something is legally bound to do it or to do for avoiding the harm that may arise if it did it. So that is how the criminal intimidation essential ingredients are there. ठीक है दोस्तों, ये दोनों चीजें जरूरी है that exist together for the offense to be complete. ठीक है, absence of any of them. So for example, let's say a cause alarm, ठीक है, causing harm to do a person. So either A and B चाहिए
ए और सी, सॉरी, ए एंड सी चाहिए, ये दो चीज़ें चाहिए, ठीक है। या तो आप उसको फोर्स करोगे कि ये करो, या तो आप उसको बोलोगे कि तुम ये मत करो, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ एन ऑफेंडर merely threatens any person but has no intention to harm him, ठीक है, उसको सिर्फ थ्रेटन करता है, कोई इंटेंशन नहीं है हार्म करने का, इट इज नॉट इन इंटिमिडेशन, ठीक है। बहुत बार होता है ना, टीचर आपको बोलते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बहुत बार ये चैनल के ऊपर बोलता हूं कि भाई अगर तुम लोगों ने फालतू का डिस्कशन किया, आई विल स्टॉप इट इमीडिएटली, that's not, you can say, matlab criminal intimidation. I hope it is very clear, okay. Similarly, if it directly harms a person without threatening him, other offenses may apply but section 503 will not apply, ठीक है। सो उसको थ्रेटन नहीं किया, हार्म कर दिया, तो ये होगा ही नहीं। सो यहाँ पे उसने थ्रेटन करने की कोशिश करी थी क्या, ऐसा शायद दिख रहा है, यस, ग्रेट। आगे देखते हैं, FIR चार्जेस ऑन रिया के ऊपर एक और कंप्लेंट है, रिया टूक अवे his laptop, credit cards, etc. ठीक है, which is theft, चोरी करी, ठीक है, चोरी करने का आरोप है, ठीक है। So if let's say चोरी का गणित लगाते हैं, ठीक है, so this is section 380, section 378 में essential ingredient बोले हैं कि क्या होगा, the offender must have a dishonest intention to take property, ठीक है, एक तो dishonest intention होना चाहिए, property in question must always be a movable property and not immovable property, laptop, credit card, they are basically movable property. Offender must take the property out of other person's possession without consent, ठीक है, and offender must move property to complete its taking. So वो property खुद ले जाने चाहिए, that is called theft, ठीक है। दोस्तों एग्जाम में ये बहुत बार सवाल आता है कि अगर मानो मिस्टर ए वेंट टू मिस्टर बीज हाउस और उन्होंने वहाँ पे एक अंगूठी देखी और वो मिस्टर बी के पोजेशन में से हटाने के लिए उन्होंने मिस्टर बी के घर में ही कहीं पे छुपा दी, जो मिस्टर बी को नहीं मिला और मिस्टर ए के ऊपर ये चोरी का इल्जाम लगा, सो विल दैट बी प्रूवन? In fact, it is proven because you can say he must have dishonest intention. Yes, ठीक है। Immovable property के बारे में बात हो रही थी ना भैया, movable property के बारे में बात हो रही थी, ठीक है। Offender must take property out of the person's possession without consent. Yes, and offender must move property to complete his taking. तो उसने move करी, ठीक है, उस बंदे के नॉर्मल टेबल पे रखी थी या कहीं कबोर्ड में रखी थी, वहां से उठाकर कहीं पे लगा दी। Is this comfortable? Great दोस्तों। If anyone of them is missing, the offender is not guilty of theft. So for example, let's say a person may take and move somebody else's property thinking it actually belongs to him, ठीक है। For example, आप किसी के घर पे गए and you realize there is a very good umbrella and you took, oh, that's your umbrella, ठीक है, you took it, ठीक है, और आप निकल पड़े, आपको पता नहीं है आपकी अम्ब्रेला है या किसी और की अम्ब्रेला है, ठीक है, आप लेकर गए, आपको लगा आपकी है ना, और फिर that's not a theft, that's a mistake. Okay, and then the last complaint is Rhea abandoned Sushant during a delicate stage, resulting in this suicide. Now this is very tricky दोस्तों, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ट्रिकी एरिया है इस बात पे जाना, that is section 306, abatement of suicide. दोस्तों we have already made a video on section 309, ठीक है, which is about suicide. So please उसको देखिएगा दोस्तों, attempt to commit suicide, है ना, उस वीडियो को देखना भूलिएगा मत, because that gives you complete information about that section. Here section 306 about abatement of suicide. Now to have abatement of suicide, what are the essential ingredients? Number one, commission of suicide by the deceased. This is very important. उस बंदे का सुसाइड होना जरूरी है, ठीक है, उसके बगैर ये चलेगा नहीं, ये उसके बगैर एसेंशियल इंग्रेडिएंट आएगा ही नहीं, ठीक है। आई एम श्योर यू नो अबेटमेंट, ओके। सो अबेट एज अ वर्ड मीन्स इंस्टिगेट करना, ठीक है, किसी को प्रोवोक करना, किसी को फोर्स करना, ठीक है, किसी को उकसाना कि भाई तू ये गलत काम कर, दैट इज कॉल्ड अबेटमेंट. सो योर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड. ओके, सो इंस्टिगेशन डन बाय एक्यूज फॉर कमिटिंग सुसाइड, ठीक है, एंड मेंटल स्टेट ऑफ द एक्यूज, दिस आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट. ये देखना पड़ेगा कि उस बंदे का मेंटल स्टेट कैसा था. अगर बुरा मेंटल स्टेट था और उसमें अगर आप नॉर्मल एक्टिविटी भी करोगे, ठीक है, जो नॉर्मल वे में वो आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर या आपका एक तरीके से टॉन्ट गिना जाएगा, बट इन अ बैड मेंटल स्टेट ऑफ you can say condition that may be termed to be very you can say problematic, fatal हो सकता है. So we have to be very careful about it. Okay, so this is very crucial. उस समय पे उसका mental state कैसा था. Instigation done by the accused for committing suicide, ठीक है, उसने instigate करना चाहिए, ठीक है, and commission of suicide by the deceased. यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो mens rea, ठीक है,
is basically decided based on mental state of the accused, उसका आपको नॉलेज था और आपने उसके बावजूद इंस्टिगेट किया. दिस इज हाउ द मेंस रिया इज आइडेंटिफाइड. सो दोस्तों, पूरे इंडिया में सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर जस्टिस के बारे में बात हो रही है दोस्तों. आई बिलीव दैट not just Sushant Singh but everyone in the country should get justice. Yes, and in this case Sushant Singh must get justice in case some people might have done some bad things. Yes, okay, so we have to investigate it in a right manner, identify the culprit, and you can say this situation in a very comfortable scenario for the entire country. So दोस्तों, ये हमने कोशिश करी कि इससे हम कुछ सीखें. ठीक है ना. द आइडिया ऑफ दिस सेशन वॉज नॉट एट ऑल कि हम किसी एक के फेवर में किसी के अगेंस्ट में हैं. वी आर इन फेवर ऑफ जस्टिस. दैट इज व्हाट वी कैन टेल. ओके, थैंक यू दोस्तों. अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत. ठीक है, बेल आइकन दबाना भूलिएगा मत, सो दैट द न्यू वीडियो व्हेनेवर वी आर पब्लिशिंग इट गिव्स यू कंप्लीट इन्फॉर्मेशन. ओके, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे.